Morning students, today is the last lecture of this chapter number 2, okay, and the last topic is common potential and then loss of energy. Okay, common potential. Now what is common potential? We are considering two capacitors, okay, conducting capacitors. Okay, these two are not plates of capacitor. ये अलग capacitor, ये अलग capacitor. This is capacitor with capacitance C1. This is capacitor with capacitance C2. Okay, both are given some potential V1 and V2. Fine. So charge will be developed in them. इसका Q1, इसका Q2 we are suppose we are taking. Okay, fine. So what can we see that total charge Q is equals to Q1 plus Q2 होगा. Yes, this will be total charge of the system. Okay, so Q is equals to value of formula of Q is Q is equals to C into V. Yes, so we will put C into V, but for first capacitor it is C1 V1 and for second it is C2 V2. Okay, fine. Now we will understand common potential. What we are doing now, we are joining these two capacitor by a wire. Okay, suppose किसी में potential ज़्यादा था, suppose V1 was greater, V2 was lesser. Okay, तो क्या होगा? V1 was greater, so charge will start flowing. Yes, charge flow में start होगा, ठीक है? और potential भी दोनों में potential difference भी equal maintain होना start होगा. Fine, so potential बराबर होना स्टार्ट होगा. इन द सेम वे चार्ज आल्सो. ओके, कब तक होगा फ्लो? until the potential of these two capacitors become equal. yes, जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो होगा. yes, तो what I am considering कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, दैट इज V. ओके, तो चार्ज भी कुछ अलग हुआ होगा, दैट आई एम टेकिंग एज Q डैश. ओके, Q dash is equals to Q1 plus Q2. Okay, then what it will be? Q1 plus I'm writing Q1 plus Q2 now. Okay, then Q dash is equals to, now what is value of Q1? Q is equals to C into V. Yes, so it will be C1 into, it is potential is V plus C2 into V. Yes, V1 V2 नहीं होगा. Now it will be VV because potential is equal. This is equation 1 and this is equation 2. Okay, we know from law of conservation of charge. ठीक है, चार्ज कभी भी खत्म नहीं होगा. Okay, charge is conserved. Okay, that means पहले जितना चार्ज था अभी उतना चार्ज होगा. Yes, okay, that means from law of conservation of charge, Q dash is equals to Q. Yes, definitely. Okay, now value of Q dash is C1V plus C2V is equals to, for Q, C1 V1 plus C2 V2. Okay, here you can write a line after common potential. Okay, now I am taking V common, so C1 plus C2 is equals to C1 V1 plus C2 V2. Fine. Now I am sending this C1 C2 to denominator. C1 plus V1 plus C2 into V2. C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. This is the expression for common potential. Expression for common potential. Okay, now we will move to loss of energy. Mark this as equation number 1 because 1 not, it will be 3 because it will be used afterwards. Okay, so let's move to now loss of energy. So now loss of energy. Okay, I have kept equation number 3 here for our future reference. Okay, now energy. Okay, we will see. Okay, first when the capacitors were not connected. Okay, energy, that means potential energy U when initially. Okay, U I am denoting. Okay, formula for
potential energy or the energy stored inside a capacitor. When it comes to potential energy for capacitors or energy stored inside a capacitor, it is given by half CV square. Yes, so for first capacitor it will be half C1 V1 square, and for second capacitor plus half C2 V2 square. Okay, yes, and finally UF when the capacitors were connected by a wire. Okay, तो क्या हो गया था, V1 V2 was equals to V. Okay, so in place of V1 V2 we will keep V 1 by 2 C1 V square 1 by 2 C2 V square, जैसे कि पिछले में हुआ था Q dash, है ना. What we did in Q dash, we kept the value of V1 and V2 as V. Here also we have kept the same. Okay, so UF is equals to 1 by 2. I am taking V square common that side, so C1 plus C2 is left inside the bracket and V1 square is kept here. Okay, V square is kept that side. Okay, I have taken common. Now we can see this is also expression for common potential. Yes, and here also it is common potential, and value of V is this. So what we can write, putting the value of equation number 3 here कर सकते हैं. Yes, value of V ये है, इसको यहाँ पर V की जगह रख देते हैं. तो हाफ C1 plus C2 into, in place of V we are keeping C1 V1 plus C2 V2 whole divided by C1 plus C2 V का स्क्वायर है, so here it will be square. Okay, now square will be given to numerator as well as denominator. So UF is equals to 1 by 2 C1 plus C2 5 into square on the numerator C1 plus C2. Okay, C1 V1 plus C2 V2 whole square divided by C1 plus C2 whole square. Yes, square. Now this square C1 plus C2, यहाँ पर भी C1 plus C2 they can cancel. यहाँ से square बेटा और यहाँ से C1 plus C2 cancel. One C1 plus C2 is left. So UF is equal to 1 by 2 C1 V1 plus C2 V2 square by C1 plus C2. Okay, this is our UF. Okay, that means initial energy and final energy we have got. Okay, तो यहाँ पे क्या है, कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा. ठीक है, जब यहाँ पर से एक जगह से दूसरी जगह पोटेंशियल ट्रांसफर होगा, so there will be some amount of energy lost. How can we calculate the energy lost? तो पहले जितना एनर्जी था और आखिर में जितना एनर्जी है, we can subtract them. Okay, that means final energy minus initial energy or initial energy minus final energy. Okay, we can do like that. Okay, what we can say, अगर एनर्जी लॉस हुआ है तो पहले ज़्यादा होगा. Yes, initially ज़्यादा हुआ होगा. Yes, UI was greater than UF. Yes or no? क्यों? क्योंकि पहले ज़्यादा था, फिर लॉस हुआ तो कम हो गया. So that means UI is greater than UF. तो क्या करना पड़ेगा, UI minus UF. Yes, so loss of energy U loss. Okay, U loss is equals to UI minus UF. Yes, so अब निकालते हैं U loss, है ना, is equals to UI, value of UI is this, put कर देते हैं 1 by 2 C1 V1 square plus half C2 V2 square. Okay, minus UF, this is the value of UF, minus 1 by 2 C1 V1 plus C2 V2 whole square by C1 plus C2. Okay, yes, now
u loss is equals to, this will be as it is, but we can take 1/2 common, यहाँ से यहाँ से यहाँ से. Okay, so I am taking for now number 2. Okay, I am taking 1/2 common, तो क्या होगा, c1 v1 square plus c2 v2 square. Okay, I am opening this as a plus b whole square, तो क्या होगा, c1 square v1 square that is a square. यहाँ पे माइनस का साइन. ओके, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन आगे के साइन चेंज होंगे. ओके, सो माइनस, ठीक है. और व्हाट वी कैन डू, व्हेन वी विल टेक एलसीएम एट दैट टाइम आई विल चेंज द साइन. ठीक है, आई एम नॉट प्रेजेंटली चेंजिंग द साइन, आई एम कीपिंग अ ब्रैकेट हियर. ठीक है, प्लस c2 c2 v2 का यहाँ भी होगा. यस, बिकॉज दिस इज होल स्क्वायर, दोनों के साथ जाएगा. प्लस 2ab 2 c1 c2 v1 v2, है ना. दिस इज आई रिटन स्मॉल क्योंकि छोटा सा था, तो 2 c1 c2 v1 v2, रिमेंबर दिस थिंग. ओके, डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2, ऐसा होगा. ठीक है, अब यहाँ लेंगे एलसीएम. u लॉस इज इक्वल टू 1/2. अब लेता हूँ एलसीएम. एलसीएम इज c1 प्लस c2, पूरा लंबा c1 प्लस c2. फाइन, इन द डिनोमिनेटर, एंड दिस c1 प्लस c2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दीज टू, है ना. तो क्या होगा, c1 v1 स्क्वायर इंटू c1 c2, है ना, फिर इसके साथ भी प्लस c2 v2 स्क्वायर इंटू c1 प्लस c2. ओके, यस. नाउ माइनस, नाउ आई एम ओपनिंग दिस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खुल जाएगा, साइन माइनस माइनस हो जाएगा. तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ओके, माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर. ओके, ये साथ में डिवीजन में माइनस 2 c1 c2 v1 v2. ओके, फाइन. नाउ आई एम मैपिंग दिस साइड, नो नीड ऑफ दिस इक्वेशन नाउ. ओके, बी विथ मी. ओके, यहाँ तक, ठीक है. नाउ u लॉस, नाउ आई विल एलाबोरेट, लंबा खींचेंगे, बहुत छोटा हो रहा था. ओके, नाउ 1/2 इज आउटसाइड. ओके, हाँ. सो व्हाट वी कैन सी, वी विल मल्टीप्लाई दिस c1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर c2 के साथ ये दोनों, मीन्स अ ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा c1 इंटू c1 स्क्वायर. ओके, c1 स्क्वायर एंड ऑलरेडी इट इज v1 स्क्वायर. ठीक है, पहले c1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब c2 के साथ होगा, तो c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर. Okay, fine. Now for this we will multiply plus c1 into c2 v2 square. ये c1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, c1 c2 v2 square. Okay, then with c2 into c2 square plus c2 square v2 square. ओके, नाउ माइनस, वो सब जैसा वैसे लिख देंगे, c1 v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2 c1 c2 v1 v2. ओके, होल डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2, है ना.
तो आई एम टेकिंग ये आउटसाइड दी ब्रैकेट, ऐसे कैसे मिलते हैं, ओके या फिर समझ जाओ पूरे डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. Okay, now what we can see, the terms which are cancelling are C1 square V1 square और ये C1 square V1 square. Yes, in the same way plus C2 square V2 square minus C2 square V2 square. Okay, these terms have cancelled and the terms left are u loss 1 by 2. I am taking this C1 by C2 common. Outside means outside, okay. So what C1 plus C2 I am taken common. Okay. Now the terms left are C1 C2 V1 square plus C1 C2 V2 square minus 2 C1 C2 V1 V2. ये बचा है ब्रैकेट के अंदर. ओके, नाउ व्हाट वी कैन सी, C1 C2 C1 C2 C1 C2 सबके पास C1 C2 है, वी कैन टेक कॉमन. तो u loss is equals to C1 into C2. I have taken common and rest I am writing as it is V1 square. Okay, my marker is getting light. 1 minute please. Okay, now we are moving ahead. So V1 square is left. C1 C2 we have taken common from all three terms, plus V2 square is left, plus 2 C1 C2 we have taken common, so V1 V2 is left inside. Okay, now we can see a formula A square plus B square plus 2AB. Yes, so we will write A क्या है हमारा V1, B क्या है V2. So u loss is equals to C1 C2 by 2 into C1 plus C2. Okay, and this we can write as V1 plus V2 का whole square. Okay, so this is our final expression. थोड़ा जमा के लिख देंगे तो it will become u loss is equals to C1 C2 1 by 2 C1 C2 by C1 plus C2 है ना, and with this V1 plus V2 whole square. So this is our final expression, or you can keep up to here only. Okay, so if you have any doubt or anything is not clear, you can write on the comment box. So okay, thank you, and please subscribe my channel for further videos. Thank you.